Assalamu alaikum. Today we will talk about the levels of prevention and modes of intervention. Like, consider that here is a disease. Just consider a cardiovascular disease as an example. There is cardiovascular disease and you want to prevent that disease. So at which levels you can prevent that disease? And in those particular levels, like here are four particular types of levels. आपके पास पहले प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्शरी प्रिवेंशन है. अमंग दोज प्रिवेंशन देयर आर पर्टिकुलर मोड्स ऑफ इंटरवेंशन. लाइक आपको कैसे इंटरवीन करोगे इस प्रिवेंशन लेवल पे, आप कैसे इंटरवेंशन करोगे, कौन सी इंटरवेंशन करोगे टू प्रिवेंट दैट डिजीज, राइट. I will draw a flow chart here for you, and at the end of this video we will recall that flow chart and you will revise that at this particular level which prevention can be applied. Just consider that there is a healthy person. Okay, this is a healthy person, and after that normally in all the diseases, I doesn't matter whatever the disease is हर disease इस तरह प्रोग्रेस करती है कि एक हेल्दी पर्सन था, उसके अंदर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स डेवलप हुए. आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स द पर्सन डेवलप द डिजीज. एंड आफ्टर दैट व्हाट डिजीज डू, डिजीज ऐसे पड़ी तो नहीं ना रहती, डिजीज डू प्रोग्रेशन, disease progresses, and after the progression of the disease what happens? There are some complications, right? Complications, and the person suffers from this disease. So this is the flow chart, and at the end of this video I will draw it again for you people, and you will see that कि हमने किस लेवल पर कौन सी प्रिवेंशन करनी है. Okay, let's start. First of all is the primordial prevention. Primordial prevention means that again consider an example of Lahore or Islamabad. Okay, in Lahore और इस्लामाबाद कोई भी आप सिटी ले लें, ठीक है, आप चाहते हैं कि इन इन पर्टिकुलर लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस डेवलप ना हो, ठीक है. So what you have to do, you have to reduce the risk factors of the disease. This is primordial prevention. Okay, like you know already that cardiovascular disease occurs due to multiple factors. There are multiple factors like obesity, like hyperlipidemia, like intake of saturated foods, like junk foods. If a person eats junk foods, hyperlipidemia हो जाता है, hyperlipidemia हो जाता है, तो इसकी वजह से एथियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं. इट कैन अल्टीमेटली लीड टू cardiovascular diseases, MI, and many more. So you know that there are multiple factors, and mainly cardiovascular disease has multifactorial causation. So it is not necessary that you have to reduce each and every of these risk factors. Only if you reduce, if you bring one factor out, that whole chain will be broken. Okay, and that particular disease will not occur. So same we have to do this here. Just consider that this is a particular person from Islamabad. Okay, he is a healthy person, right? He is what? He is a healthy person. इसको कोई भी डिजीज़ नहीं है, ठीक है. अब आप चाहते हो, आप उसके वेल विशर हो, आप चाहते हो इसको डिजीज़ हो भी ना, ठीक है. आप इसके अंदर, आप चाहते हो इसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो, क्योंकि रिस्क फैक्टर डेवलप हो गया तो फिर वो पूरी डिजीज़ वाली चेन जो मैंने पहले ड्रॉ की वो स्टार्ट हो जाएगी. ओके, अगर आप पर्टिकुलरली इस लेवल पर इंटरवेंशन करते हो तो दिस इज़ प्राइमोडियल प्रिवेंशन. यू प्रिवेंट अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम कैचिंग एनी रिस्क फैक्टर. सो दिस इज़ द प्राइमोडियल प्रिवेंशन, राइट. लाइक व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन डू इंडिविजुअल एजुकेशन. इंडिविजुअली आप एजुकेट करो, या आप ग्रुप एजुकेशन करो, मैस एजुकेशन करो. आप उनको बताओ कि आपने ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना, आपने जो है वो अपने ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए. आपको अगर ओबेसिटी हो गई तो ये बहुत सारी डिजीज़ की तरफ लेकर जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस की तरफ लेकर जाएगा, आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जाएगा. आपने इनको एजुकेट कर दिया. ओके, like here your book says that smoking leads to coronary heart diseases. सो आप उनको एजुकेट कर देते हो कि स्मोकिंग को आप डिस्करेज करो, स्मोकिंग कम करोगे तो आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स भी नहीं आएंगे, ठीक है. ओके, सो सपोज दैट दैट हेल्दी पर्सन ऑफ इस्लामाबाद, उसने आपकी बात नहीं सुनी. ही डिडंट लिसन टू यू. ही कंटिन्यूड ईटिंग जंक फूड, and risk factor which is obesity has occurred now in that healthy person. Okay, now what you have to do, now what you will do, you are still his well wisher. आप फिर भी स्टिल उसका भला चाहते हो. आप चाहते हो कि रिस्क फैक्टर तो आ गया, ये ओबीस हो गया बंदा, लेकिन इसको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ एट दिस पर्टिकुलर लेवल what you will do, at this particular level you will do primary prevention, right? You will do here primary prevention. If you prevent risk factor from converting into the disease, okay, if you control this risk factor,
to be converted into this disease. This is the primary prevention, right? So प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास पर्टिकुलरली दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं. एक हमारे पास जो है वो हेल्थ प्रमोशन आ जाती है और एक हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ जाती है. हेल्थ प्रमोशन इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल थिंग वेयर यू डू हेल्थ एजुकेशन. यू स्टिल एजुकेट देम दैट यू हैव बिकम ओबीज, बट प्लीज़ रुक जाओ, ठीक है. एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, environmental, you can do environmental modifications, like if you are such a well wisher of that person, you have to close all the restaurants of Lahore. It is just an example, just for fun. Okay, you will have to do environmental modifications. After that, you can do nutritional intervention. Still, if you tell them, you can tell that person that if you control your obesity, still you can be prevented from the cardiovascular disease. Okay, you can do nutritional interventions, you can do periodic medical examinations. जैसे आप उसका रेगुलर चेकअप कराते रहो कि कहीं उसको रिस्क फैक्टर की वजह से डिजीज़ डेवलप तो नहीं हो रही. ओके, after that you can give sex education. Sex education is not concerned with this example, but health promotion involves general. It enables people to increase control over and to improve health. Okay, एक जनरल आप हेल्थ प्रमोशन कर रहे हो जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. आप इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करोगे, सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ प्रिवेंट नहीं होंगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कंट्रोल हो जाएगी और भी बहुत सारी डिजीज़ कंट्रोल हो जाएंगी. हेल्थ एजुकेशन करोगे तो ड्रग अब्यूज़र्स में भी ड्रग लेना छोड़ दें, ठीक है. तो इट इज़ ओवरऑल हेल्थ प्रमोशन. आप उनसे कहोगे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को इनकरेज करोगे, डिस्करेज करोगे स्मोकिंग को. एंड नंबर टू थिंग इन प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ टू डू स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. Like if anyone has developed the risk factor, like if anyone has developed the risk factor of if someone has become deficient in vitamin C, you will start giving particularly vitamin C to that person. So that's scurvy. Scurvy is a disease. This cannot happen in that person. So this is specific protection. Like it sounds specific कि आप vitamin C दे रहे हो particularly scurvy को prevent करने के लिए, आप vitamin D दे रहे हो particularly rickets को रोकने के लिए. एंड सिमिलरली इम्यूनाइजेशन, रिमेंबर दिस इज़ योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. इम्यूनाइजेशन भी आपकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ही आता है. कीमो प्रोफाइलेक्सिस भी आपकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आती है. ओके, आफ्टर दैट कम टूवर्ड्स दिस secondary prevention. Secondary prevention, now unfortunately that person still ignored your indications, still ignored your health promotion advices and your specific he didn't did specific protection. Now that unfortunate person has got the disease. Now what we have to do, we are still his well wisher, we will do secondary prevention. अब हम secondary prevention करेंगे. अब ये पैथोजेनेसिस फेज है, डिजीज़ हो गई है उसको, अब हमने क्या करना है, डिजीज़ को मज़ीद प्रोग्रेस होने से रोकना है. सो वी आर डूइंग सेकेंडरी प्रिवेंशन हियर. एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन मोड ऑफ इंटरवेंशन इज़ मेनली अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. ओके, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक इफ़ यू वांट कि सर्वाइकल कैंसर के चांसेस कम होने चाहिए, सर्वाइकल कार्सिनोमा को आप प्रिवेंट करना चाह रहे हो, यू विल टेक पैप स्मीयर, यू विल डू पैप स्मीयर ऑफ वुमेन ऑफ फीमेल्स ऑफ 20 to 30s. लाइक यही एज कॉमन होती है जिसमें सर्वाइकल कार्सिनोमा के चांसेस यंग फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं. आप सारी 20 to 30s की फीमेल्स को ले लोगे, आप उनका पैप स्मीयर करोगे ताकि उनको डिजीज़ ना हो, स्क्रीनिंग करोगे उनकी ताकि उनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, और उनमें से अगर कोई अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव एट रिस्क निकले या पैप स्मीयर जिसका पॉजिटिव आए तो आप फ़ौरन उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर दो और वो बच जाए उस डिजीज़ से. ओके, सो दिस इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन. लाइक हियर दे हैव गिवन दैट स्पूटम एग्जामिनेशन किया आपने या मास मिनिएचर रेडियोग्राफी की आपने, ठीक है, और पल्मोनरी टीबी किसी को निकल आई तो आपने उसको जो है वो बचा लिया, ठीक है, ट्रीट कर दिया. And similarly, school children, screening examination of school children for detection and correction of defects. After that comes your specific protection. I'm sorry. After that comes this tertiary prevention. Okay, that in any unfortunate person, the disease has also progressed. Now you want to reduce the complications of the disease, like when disease process has advanced beyond its early stages, and prevention is done by tertiary prevention, right? It is done in late pathogenesis phase. Pathogenesis has been started in like pathogenesis has started in early pathogenesis, we do secondary prevention, and in late pathogenesis phase we do tertiary prevention. And in tertiary prevention you do disability limitation and you also do rehabilitation. These two things are that you have to do.
एक चीज़ और जो आपने याद रखनी है, ये कीमोप्रोफाइलैक्सिस पास्ट पेपर में आपका आया हुआ है और एग्जांपल्स पूछी हुई हैं कीमोप्रोफाइलैक्सिस की। तो आपने याद रखना है मलेरिया में आप क्या करते हो, टीबी में आप क्या करते हो, आइसोनियाजिड दे देते हो, ठीक है। मलेरिया में आप क्लोरोक्विन दे देते हो, तो ये आपका पास्ट टेस्ट सीक्वेंस को आपने याद रखना है। Okay, so we were talking about disability limitation. Like if a person has become handicapped, you must know the differences between impairment, handicap, but I will tell it in a separate video. And disability, these are separate things. You must know all of their differences. But here we are concerned only with levels of prevention. So you are going to do disability limitation here and rehabilitation. Rehabilitation का वर्डली मीनिंग क्या है? बहाली करना, बहाल करना किसी चीज़ को. Like if a person has become handicapped, what you will do, you will use combined and coordinated medical, social, educational and vocational measures, okay, for training the individual to the highest possible level of functional ability. आप अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करोगे कि वो उसकी वोकेशनल, मेडिकल, सोशल या एजुकेशनल जिस भी चीज़ में उसको हैंडीकैप्ड हुआ है, वो जिस चीज़ की भी कमी आई है उसकी पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से, जैसे पोलियो है तो वो हैंडीकैप हो गया, चल नहीं पा रहा, तो आप उसकी फिजियोथेरेपी करोगे. फिजियोथेरेपी फॉर पोलियो पेशेंट इज़ अ टर्शरी प्रिवेंशन because you are doing your rehabilitation. And similarly rehabilitation has many types, like here they have given medical rehabilitation, ओके. लाइक फिजियोथेरेपी के एग्जांपल मैंने आपको दी, दिस इज मेडिकल रिहेबिलिटेशन. वो चल नहीं पा रहा लेकिन आप उसकी फिजियोथेरेपी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि वो कुछ ना कुछ अपने पाँव पे खड़ा हो पाए. आफ्टर दैट कम्स ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन. ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन लाइक आप उसको कोई और जो है वो ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन करना चाह रहे हो, वो पर्सन जो है वो चल नहीं पा रहा जिसकी वजह से वो अपने काम पे भी नहीं जा रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो आप किसी ना किसी तरह उसको कोई और आर्ट सिखा दोगे कि वो घर पे बैठे कुछ ना कुछ काम कर ले. वोकेशनल रिहेबिलिटेशन इज़ द सेम कि वो अपना लाइवलीहुड अपनी कुछ ना कुछ कमा सके. सोशल रिहेबिलिटेशन लाइक यू विल डू रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स. इन साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन यू विल डू साइकोलॉजिकल थेरेपी. आप you will train that person, you will restore personal dignity and confidence, okay. Here you can do speech therapy if a person cannot speak due to any accident, due to any disease. You will do speech therapy. Exercise in the case of the polio. Okay, all of these things are tertiary prevention. Okay, so immediately let me draw that again for you. This is a healthy person. Okay, this is a healthy person. A risk factor comes in that person. After that, disease occur, and after disease occur, disease progression occurs, and after that, complications occur. Okay, so if you want that healthy person to be saved from that disease, आप चाहते हो healthy person में risk factor ना आए, you will do primordial prevention. If risk factor has come, you want that disease doesn't occur. आप disease होने से बचाना चाहते हो. This is primary prevention. Disease has occurred, but you want that disease progression shouldn't occur. This is secondary prevention. Disease progression has occurred, but you want that कि वो पर्सन अब मज़ीद सफ़र ना करे, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो गई हैं तो उसको रिहेबिलिटेट कैसे करना है. दिस इज़ टर्शरी प्रिवेंशन. I hope so this will be clear to you people. Thank you very much.